जय माता दी दोस्तों, आज हम दुर्गा सप्तशती के एकादश अध्याय यानी कि 11वें अध्याय का पाठ करेंगे। एकादश अध्याय व्यापार व सुख संपत्ति की प्राप्ति के लिए। कारोबार में हानि हो रही है, पैसा नहीं रुकता है या बेकार के कामों में नष्ट हो जाता है तो यह पाठ करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। श्री दुर्गा सप्तशती एकादशोध्याय। देवताओं द्वारा देवी की स्तुति तथा देवी द्वारा देवताओं को वरदान। ध्यानम। ॐ बालरविद्युतीमिन्दुकिरीटां तुङ्गकुचां नयनत्रययुक्तां स्मेरमुखीं वरदाङ्गकुशपाशाभितिकरां प्रभजे भुवनेशीम्। ॐ ऋषिरुवाच देव्याः ते तत्र महासुरेन्द्रे सेन्द्राः सुरावहीन पुरोगमास्तां कात्यायनीं तुष्टुरिष्टालाभाद् विकाशि वक्त्राब्ज विकाशिताशाः देवी प्रपन्नारति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम्। त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य आधारभूता जगत्स्तवमेकमहीश्वरूपेण यतः स्थितासि अपामस्वरूपस्थितया त्वयेतदाप्यायते कृतस्नमलङ्घ्यवीर्ये त्वं वैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्या विश्वस्य बीजं परमासि माया सम्मोहितं देवि समस्मेतत् त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतुः विद्याः समस्तास्तव देवी भेदाः स्त्रियः समस्ताः सकला जगत्सु त्वय्यकया पूरितमम्बये तत् का ते स्तुतिः स्तव्यपरा परोक्तिः सर्वभूता यदा देवी स्वर्गमुक्तिप्रदायिनी त्वं स्तुता स्तुतये का वा भवन्तु परमोक्तय सर्वस्य बुद्धिरूपेण जनस्य हृदये संस्थिते स्वर्गापवगर्ते देवी नारायणी नमोऽस्तुते कलाकाष्ठदिरूपेण परिणामप्रदायिनी विश्वस्योपरतो शक्तिनारायणी नमोऽस्तुते सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते सृष्टिस्थितिविनाशान्नान् शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रये गुणमये नारायणी नमोऽस्तुते शरणागतदिनार्थपरित्राणपरायणे सर्वस्यारति हरे देवी नारायणी नमोऽस्तुते हंसयुक्तविमानस्ते ब्रह्माणि रूपधारिणी कौशाम्बशरिके देवी नारायणी नमोऽस्तुते त्रिशूलचन्द्राहिधरे महावृषभवाहिनी माहेश्वरी स्वरूपेण नारायणी नमोऽस्तुते मयूरकुक्कुटवृते महाशक्तिधरेण्यगे कौमार्यरूपसंस्थाने नारायणी नमोऽस्तुते शङ्खचक्रगदाशाङ्गगृहीतपरमायुधे प्रसिद्धवैष्णवीरूपे नारायणी नमोऽस्तुते गृहीतोग्रमहाचक्रे दंष्ट्रोदधृतवसुन्दरे वराहरूपिणी शिवे नारायणी नमोऽस्तुते नृसिंहरूपेण व्रेण हन्तुं दैत्यान् कृतोद्यमे त्रैलोक्यत्राणसहिते नारायणी नमोऽस्तुते किरीटिनि महावज्रे सहस्रनयनोज्ज्वले वृतप्राणहरे चेन्द्री नारायणी नमोऽस्तुते शिवदूतिस्वरूपेण हतदैत्यमहाबले घोररूपे महारावे नारायणी नमोऽस्तुते दंष्ट्राकरालवदने शिरोमालाविभूषणे चामुण्डमुण्डमथने नारायणी नमोऽस्तुते लक्ष्मीलज्जे महाविद्ये श्रद्धेपुष्टि स्वदे ध्रुवे महारात्रि महान्विद्ये नारायणी नमोऽस्तुते मेधे सरस्वती वरे भूति प्राभवितामसि
नियते त्वं प्रसीदेशे नारायणी नमोऽस्तु ते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते भयेभ्यस्त्रायिनो देवी दुर्गे देवी नमोऽस्तु ते एतद्य वदनं सौम्यं लोचनत्रयभूषितं पातु नः सर्वभीतिभ्यः कात्यायनी नमोऽस्तु ते ज्वालाकरालमत्युग्रमशेषासुरसूदनं त्रिशूलं पातु नो भितेर्भद्रकाली नमोऽस्तु ते हिनस्ति दैत्यतेजांसि स्वनेन पूर्यया जगत् सा घण्टा पातु नो देवी पापिभ्यो नः सुतानिव असुरासुरग्रसापङ्कचर्चिस्तते करोज्ज्वल शुभाय खङ्व भवतु चण्डिके त्वामनता वयं रोगान् शेषान् पहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान् सकलान् भीष्टान् त्वामाश्रितानान् न विपन्नरानान् त्वामाश्रितारयाश्रयन्ता प्रयान्ति एतत् कृतं यत्कदनं त्वयाद्य धर्मद्विषां देवी महासुरा नाम रूपैरनैकैर्बहुधा नत्ममूर्तिम् कृत्वाम्बिके तत्प्रकरोति कन्या विद्यासु शास्त्रेषु विवेकद्वीपेष्वद्वेषु वाक्येषु च का त्वदन्या मम त्वगर्तेन तीमहान्धकारे विभ्रामयत्ते तदतीव विश्रं रक्षांसि यत्रोग्रवीशाश्रु च नागा यत्रारयोधस्यु बलानि यत्र दावानलो यत्र तथाब्धिमध्ये तत्र स्थिता त्वं परिपासि विश्वं विश्वेश्वरी त्वं परिपासि विश्वं विश्वात्मिका धारयसि ति विश्वं विश्वेशवन्द्या भवती भवन्ति विश्वाश्रया ये त्वयि भक्तिनम्राः देवी प्रसीद परिपालयनो मरिभीतेरनित्यं यथा सर्वधा ददुनैव सद्य पापानि सर्वजगतां प्रशमं नयाशु उत्पातपाकजनितांश च महोपसर्गान् प्रणतान्नान् प्रसीद त्वं देवी विश्वारती हारिणी त्रैलोक्यवासिनी मिड्डे लोकानां वरदा भव देव्युवाच वरदाहं सुरगणावरं यन्मनसेच्छत तनुरुनुध्वं प्रयच्छामि जगतामुपकारकं देवाऊचुः सर्वाबाधप्रशमनं त्रैलोक्यसाखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरिविनाशनं देव्युवाच वैवस्वतेन नन्तरे प्राप्ते अष्टाविंशतिमे युगे शुम्भनिशुम्भश्चैवान्या उपतस्य ते महासुरो नन्दगोपगृहे जाता यशोदागर्भसम्भवा ततस्तो नाशयिष्यामि विन्ध्याचलनिवासिनी पुनरप्यति रौद्रेण रूपेण पृथ्वीवितले अवर्तीय हनिष्यामि वै प्रचितांस्तु दानवान् भक्षयन्त्याश्चतानुग्रान् वै प्रचितान् महासुरान् रक्तादन्ता भविष्यन्ति काडिमी कुसुमोपमाः ततो मानदेवताः स्वर्गे मर्ते लोके च मानवाः स्तुवन्तु व्याहरिष्यन्ति सततं रक्तदन्तिकाम भूयश च सत्वार्षिक्यमनावृष्ट्यामनम्बसि मुनिभिः सन्तुता भूमौ सम्भविष्यामि योनिजा ततः शतेन नेत्रान्नान् निरीक्षिष्यामि यन्मुनिन् कीर्तयिष्यन्ति मनुजाः सताक्षीमिति मां ततो नहमखिलं लोकमात्मदेहसमुद्भवेह हरिष्यामि सुराः शाकैरवृष्टेः पानधारकैः
शाकम्भरीति विख्यातिं तदा यास्याम्यहं भुवि तत्रैव च वदिष्यामि दुर्गमाख्यं महासुरं दुर्गादेवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति पुनश्च चाहं यदा भीमं रूपं कृत्वा हिमाचले रक्षांसि भक्षयिष्यामि मुनिन्नानत्राणकारणात् तदा मानमुनयः सर्वे शोषन्त्यानम्रमूर्तय भीमदेवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति यदा रुणाख्यत्रैलोक्ये महाबाधां करिष्यति तदाहं रामहं रूपम्